Unites.com, redefining Bollywood. मैं बिल्कुल डरपोक हूँ. मतलब आई एम अ सकर फॉर हॉरर फिल्म्स. जब भी हॉरर फिल्म देखती हूँ तो मैं सो नहीं सकती हूँ एक हफ्ते के लिए. एंड आई एम लाइक स्क्रीमिंग इन द थिएटर्स एंड स्टफ. सो आई एम वेरी गुड ऑडियंस फॉर अ हॉरर फिल्म. एक्चुअली जब एक हॉरर फिल्म शूट कर रहे हैं तो इतना स्कैरी नहीं है, क्योंकि स्टोरी तो मालूम है, सस्पेंस मालूम है क्या होगा. तो इट्स नॉट एज स्कैरी एज लेटर व्हेन यू सी इट. जब मैंने फिल्म देखी तो मैं डर गई पर करने के टाइम पे डर नहीं हुआ. Chemistry because we all know each other from before. Konkona is somebody I know from theatre. I know Ranveer and her separately and together, and Huma I know from Gangs of Wasseypur. So we've already had a great connect with the three of us. I have not seen any hardcore commercial acting from him at all in the two films I've done, because I did Shanghai with him where he just broke his image completely and did something so different, which I admire him so much for. And then even in Diane, of course this is a commercial film, but at the same time it's a very subtle psychological thriller. So I find he's very like he can change his acting all the time, his style of acting to suit the films that he does, which is a fantastic quality to have as an actor. On principle, I don't have any do's or don'ts when it comes to doing a character. As long as the script justifies the role. I mean, even something as simple as a kiss. Sometimes it's not needed in a film, and so you wouldn't want to do it. But at other times, if it's a relationship where it's about romance and it's about the kiss, then obviously you need it. So there's no hard and fast rules about what I would and would not do. It just has to make sense in the script. विशाल भारद्वाज is always a very good reason to work on any film. मैं बहुत admire करती हूँ उनका films, उनके aesthetic sense as an artist, and also a production house like Balaji was there. Ekta, I think, has been very particular about choosing the kind of films she has in the last year, and even the films which are coming this year. They're really interesting films. So there were many reasons to do the film. I think horror films आजकल बहुत ज़्यादा ही popularity देख रहे हैं, because even abroad आप देखेंगे तो vampires के ऊपर, zombies के ऊपर बहुत सारे फिल्म्स बन रहे हैं, टीवी शोज बन रहे हैं. अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप हॉरर बनाना चाहते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो ये हमारा रेडीमेड फोकलोर का डायन का जो मिथोलॉजी है ये हम यूज किए हैं हमारी फिल्म में, एंड आई थिंक इट्स वर्क वेरी वेल. जी नहीं, मैं डायन, राक्षस, भूत, प्रेत, एलियंस इसमें बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे स्कैरी फिल्म्स बहुत पसंद है और मेरा इमेजिनेशन बहुत ज्यादा ही विविड है. तो अगर मतलब रात को मुझे ग्रेवयार्ड के ऊपर चलना है अकेला, तो हाँ मैं जरूर डर जाऊंगी. आई विल फील स्कैर्ड. बट नॉर्मली इफ यू आस्क मी डायंस वगैरह है कि नहीं, देन नो, आई डोंट थिंक दे एग्जिस्ट. Thank you for watching. Click on the subscribe button and stay tuned.